हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज अपन बात करने वाले फ्रॉन्क्स के क्रैश टेस्ट के बारे में। तो आपको पता होगा मारुति ने जब इस फ्रॉन्क्स को लॉन्च करा था तो उन्होंने बताया था कि हमने खुद ने टेस्ट कराया और उन्होंने 5 स्टार इस गाड़ी को दिए थे। तो आज उसी क्रैश टेस्ट का उन्होंने वीडियो लॉन्च करा है, तो आप ये वीडियो देख लो भाई। Ever wondered how Maruti Suzuki prepares cars for unexpected hazards on the road? It's by putting them through numerous destructive and indestructive stringent tests. At its state-of-the-art crash testing facility, a car's safety features are closely evaluated through multiple crash tests. The dummies used for these tests are carefully calibrated to replicate the impact on actual human beings. 3, 2, 1, start. The crash is then carried out to study front and side impact on the cars as per Indian regulations. Maruti Suzuki cars combine a safe zone for protecting the passenger compartment and a crushable zone for absorbing impact called the crumple zone. A car undergoes more than 50 crash tests before it is introduced in the market. The impact on dummies, deployment of airbags, damage to seats and all other interior parts are also evaluated very meticulously. By carrying out crash tests regularly, Maruti Suzuki strives to create safer vehicles to counter the uncertainties of driving on the roads. तो भाई मारुति ने बोला है कि हमने इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से क्रैश टेस्ट करा है, तो उस हिसाब से उन्होंने देखो खुद ने ही 5 स्टार दे दिए है। लेकिन असली पता तो तब चलेगा जब असली ग्लोबल एनकैप या भारत एनकैप जो भी है वो दोनों में से कोई एक क्रैश टेस्ट करेगा और वो अपनी रेटिंग देगा। मारुति ने अपनी गाड़ी को तो चलो 5 स्टार दे दिए, तो इस पर अपन इतना बिलीव नहीं कर सकते। तो चलो भाई, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।